पैर छूते हैं, सबको आशीर्वाद देने के लिए झुकते हैं. But these days, there is much more of a culture of, maybe it's the fault of social media, maybe it's Kali Yuga, that we feel very entitled and I'm so great, I deserve everything. ये भी बदलते समय में खासकर सोशल मीडिया की वजह से हम लोगों में वो आभार की जो भावना है वो कम होती जा रही है और हम लोग अपने आप को काफी ऊंचा समझने लगे हैं. So that kind of entitlement is like a sense of pride, and it's very counterproductive to bhakti. और अगर हम इसी भावना के साथ आगे चलेंगे कि हम बहुत ऊंचे हैं या हम में बहुत कुछ है, तब वो हमारी भक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव साबित हो सकता है. So yes, there's so many beautiful quotes about gratitude. I wanted to read you something from Srila Prabhupada. माता जी के पास आभार से रिलेटेड बहुत सारे कोट्स हैं. माता जी कुछ हमारे लिए रीड करेंगी जो प्रभुपाद के टेक्स्ट से उनको मिला है. Maybe some of you distribute books. Have you ever distributed books? Yes. So here, this is a quote from a letter Srila Prabhupada wrote to some devotees who had distributed books. ये कोट माता जी एक लेटर में से पढ़ रहे हैं जो प्रभुपाद ने उनको भेजा था जो किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. So here's what he says. He says, "You are doing so much for fulfilling the desire of my spiritual master." आप इतना कुछ कर रहे हैं मेरे टीचर के लिए, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर के लिए. So you are indirectly the representative of my Guru Maharaj. तो आप मेरे महाराज को ही दर्शाते हैं. आप उनकी दृष्टि से सारे काम कर रहे हैं, तो आप मेरे महाराज की तरह हैं. आप उनकी विजन को दिखा रहे हैं. It's a beautiful vision, huh? He's saying to his disciples, "You are the representatives of my Guru." So he says, he has been helping me in this matter by sending so many young boys and girls. मेरे स्पिरिचुअल मास्टर मेरी इतनी मदद करते हैं कि वो रोज नौजवान लोगों को मेरे पास भेजते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी से बुक डिस्ट्रीब्यूट करें. He says, otherwise, who would help me in this mission? नहीं तो मुझे इस मिशन को पूरा करने में और कौन मदद करेगा. Well, I came here empty-handed and without any friend. मैं यहाँ पे बिल्कुल खाली हाथ आया था और मेरे साथ में कोई साथी भी नहीं थे. He says, I can only pray to Krishna to take care of you. मैं सिर्फ कृष्णा से यही प्रे कर सकता हूँ कि वो आप सबका ख्याल रखें. Otherwise, I cannot repay your sincere service in my mission. नहीं तो मैं इस मिशन को पूरा करने के लिए अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा नहीं पाऊंगा. It's so beautiful, right? That consciousness that Prabhupada's grateful to his tiny little disciples and servants. So gratitude it's an intention that we can put forth into the world. So ये कितना सुंदर है कि प्रभुपाद अपने छोटे छोटे हेल्पर्स के बारे में, छोटे छोटे भक्तों के बारे में इतना सोचते हैं. उनके बिना कुछ हो नहीं सकता. तो ये हमारी कॉन्शियस में कितना अच्छी चीज़ है कि हमारा जो इंटेंशन है, हमारे जो करने का तरीका है, हमें जो करना है, वो चीज़ में भी हम हम्बलनेस ला रहे हैं. It's a way that we can choose to respond to the things that happen to us each day. अगर हम आभार प्रकट करें तो हम रोजाना जो चीजें कर रहे हैं उसको कैसे करना है वो हमारे हाथ में आ जाता है. Like, you know, if you're standing under a tree, you can choose to lean into the sun or you can choose to lean into the darkness. अगर आप एक पेड़ के नीचे खड़े हैं तो ये आपके हाथ में कि आप धूप की तरफ अपने आप को टिल्ट करना चाहते हैं या फिर छांव की तरफ अपने आप को झुकाना चाहते हैं. So we can actually begin each day with an intention that I'm going to respond to ordinary circumstances with an attitude of and a practice of gratitude. तो ये हमारे हाथ में है कि हम रोजाना की चीजों में कैसे हम अपना रिस्पॉन्ड देंगे, कैसे हम उनका जवाब देंगे, कि हम हमेशा आभार ही प्रकट करेंगे. There's a nice quote. Someone said that gratitude in advance, before things happen, gratitude in advance. ये एक कोट है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब हम आभार चीजों के होने से पहले प्रकट करते हैं, is the most powerful creative force in the universe. तो उससे निकली हुई जो ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है. Yeah, so this is a powerful shift in thinking. तो ये हमारी सोच में बहुत ही ताकतवर चेंज है जब हम इस तरीके से सोचने लग जाते हैं. When we pay attention, like
Like sometimes we just kind of go through our day on automatic pilot, you know, just like I'm doing this, now I'm doing this, now I'm going here, now I'm going to school, now I'm going to work. जब हम जिंदगी में चीजें बस यूं ही करते हैं और हमें उनका पता नहीं लगता, हम बस उनको करे जा रहे हैं रोजाना, हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं. So, but when we really pay attention, there are many, many things that we can be grateful for at every moment. पर अगर हम उन पे ध्यान दें तो हमें पता लगेगा कि इस रोजाना जिंदगी में भी काफी चीजें ऐसी हैं जिस पे हम बहुत ज्यादा आभार प्रकट कर सकते हैं. Like when you wake up in the morning, did you deserve to have another day of life? Some people die in their sleep and they don't wake up. But did you deserve to have another day? काफी लोग अपनी नींद में ही मौत के मुंह में चले जाते हैं, तो हम लोग अगर अगले दिन उठ रहे हैं तो हमें इस चीज का भी आभार प्रकट करना चाहिए कि हमें एक नया दिन देखने को मिला है. So you can actually begin your day in the morning by saying, thank you, Krishna, for this day, which I didn't deserve, but by your grace you've given me another day. Let me use this day in your service. तो हम छोटी छोटी चीज़ों से आभार प्रकट करना शुरू कर सकते हैं. जैसे अगर हम अगले दिन सुबह उठ पाए तो हम कृष्णा को थैंक यू करें कि थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे एक नया दिन दिया और मैं इस दिन में पूरी तरीके से अपना ध्यान, अपना काम आपके प्रति डिवोट करने की कोशिश करूँगी. So it's said that attention is like the doorway to gratitude. Paying attention, right? Just being conscious. Like before we can be Krishna conscious, we can be conscious, right? जब हम किसी चीज़ के लिए ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो वो ध्यान लगाना ही एक्चुअली हमारे भक्ति और कॉन्शियस को प्योर करता है और हम चीज़ों को ठीक तरीके से करना शुरू कर जाते हैं. Like coming to the human form of life means becoming conscious, right? हमें जो ह्यूमन जन्म मिला है, अगर ये मिला है और हम इसी को ही समझे कि हमें ह्यूमन का एक जन्म मिला है, तो हम इसी के बारे में कॉन्शियस हो रहे हैं. इसी के बारे में जब हम पता कर पा रहे हैं कि हमें इंसान का जन्म मिला है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. I would say that's the difference between human consciousness and animal consciousness, right? तभी फर्क है एक इंसान की बुद्धि में और एक जानवर की बुद्धि में, क्योंकि हम कॉन्शियस हैं, हमें पता है हम क्या हैं. Like animals, they just bite and they sting and they growl. जो जानवर है वो सिर्फ काटते हैं, आवाजें निकालते हैं, रोजमर्रा के काम करते हैं, पर उसके बारे में ठीक से जानते नहीं हैं. But when we come to the human form of life, we can choose our response. We are response-able. You know the word responsible? We can be response-able. We are able to choose our response. पर अगर हम एक इंसान की योनि में हैं तो हम वो चूज कर सकते हैं हमें क्या करना है. जैसे शब्द है रिस्पॉन्सिबल, तो उसका मतलब है रिस्पॉन्स, यानी आप किस तरीके से वापस करने जो भी आपको एक्शन करना है उसका आप रिस्पॉन्स एबल, आप उसकी क्षमता रखते हैं चूज करने के लिए कि आप जो कर रहे हैं वो आप कैसा करें. Like I remember once when I was a young devotee, I was making rolling sweet balls with a very saintly person named Vishnu Jan Swami. He's no longer living. So we were making sweet balls. मैं याद करती हूँ जब मैं छोटी थी तो मैं मिठाई बना रही थी विष्णु जान स्वामी जी के साथ. अब वो नहीं है हमारे बीच में, तो मैं याद कर रही हूँ उनके साथ में स्वीट्स बनाना. And someone came into the room, and I don't even remember what they said, but said some crazy things, like sort of offensive crazy things. मुझे याद नहीं कि तब कौन आया था कमरे में और उन्होंने क्या बोला था, पर उन्होंने जो भी बोला था वो कुछ अच्छा नहीं था, उपशब्द इस्तेमाल किए थे उन्होंने. But this Vishnu Jan Swami was such a saintly person. पर ये विष्णु जन स्वामी जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा हम्बल डिवोटी थे. He said, oh, today he must have a cloud passing through his head. तो वो इतने हम्बल डिवोटी थे कि उन्होंने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया और सोचा कि ऐसा लग रहा है कि उनके माइंड में बादल छाए हुए हैं. And I always remember that he said that because the other person, I don't remember what he said. माता जी को याद नहीं कि उस पर्सन ने क्या कहा था. But it was such a beautiful attitude that he was taking. पर जो विष्णु प्रभु जी हैं उन्होंने जिस तरीके से उनकी बातों को अपने दिल पे ना लगा के मजाक में उड़ा दी, वो कितनी अच्छी चीज है. In other words, he's not a bad person. He just happens to have a cloud passing through his head today. तो वो इंसान गलत नहीं है, शायद उस वक्त उस घड़ी में उनके दिमाग में पर्दा छाया है या उनका मुंह ठीक नहीं है. So you can see it's a beautiful way to think, right? तो ऐसी समझ रखना, ऐसी सोच रखना बहुत जरूरी है जब हम किसी की बातों से ऑफेंड ना होके बस उनको इग्नोर करें. So we could say paying attention is like the doorway, like there's a doorway there.
So paying attention is the doorway to gratitude when we pay attention. जब हम किसी चीज़ पे गौर करते हैं तो वो गौर करना ही हमारा दरवाज़ा है बाहर किसी को आभार प्रकट करने का. And gratitude is like a doorway to opening our hearts to a sense of wonder, to a sense of the beauty that's around us everywhere. जब हम आभार प्रकट करना शुरू करते हैं तो हमारे मन के वो दरवाजे खुलते हैं जो हमें हर चीज़ से हैरान करते हैं. आसपास का नेचर, आसपास की सुंदरता के बारे में सोचकर हमें हैरानी पैदा होती है. And when we can be living in the world with this sense of wonder, so many beautiful devotees, today the sun is out, so many appreciations. जब हम आभार प्रकट करना शुरू करते हैं तब हम हर छोटी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं. आज सूरज निकला है, डिवोटीज इतने अच्छे हैं, तो ये सब सोच के हमारा मन बहुत ज़्यादा शांत और शुद्ध हो जाता है. That sense of wonder is like a doorway to feeling love and reciprocation with other people. जब हम किसी चीज़ को नोटिस करने लगते हैं, जब किसी के बारे में सोचने लगते हैं, तो वो एक दरवाज़ा है. हम जब लोगों को अप्रिशिएट करने लगते हैं क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को गौर करने लगते हैं. So I want to read you another quote that I like, if I can find it. जी एक और कोट पढ़ेंगे. Here's a nice quote. Gratitude is the capacity आभार एक ऐसी चीज़ है जिसमें भार है to stare डराने का, doubt, loss, chaos, and despair. शक, लॉस, Chaos, बहुत मेस अगर है, mess, and despair. Despair, like निराशा. to stare doubt, loss, chaos, and despair right in the eye. जो आभार है वो हमें ताकत देता है डर, किसी चीज़ का लॉस और इन सबको बिल्कुल आंखों में देखने का, हमें हिम्मत देता है. And to say, I am still here. और ये बोलने की क्षमता देता है कि मैं अभी भी यहाँ पे दृढ़ निश्चय से खड़ी हूँ. Like even in spite of all these things, I am still here to appreciate. इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद मैं यहाँ पे आभार प्रकट करने के लिए खड़ी हूँ. Here's a nice quote. Our job is to love others हमारा कर्तव्य से दूसरों के प्रति प्रेम भावना प्रकट करना है without stopping to inquire whether or not they are worthy of our love. बिना इसके बारे में सोचे कि वो हमारे प्यार के काबिल हैं या नहीं है. Do you like that one? I like that one. हाँ जी, ये बहुत पसंद करते हैं. Okay, wait. Okay, here's another one. Here's another one. This is the gift. To have the wonderful capacity to appreciate again and again ये बहुत एक अच्छा गिफ्ट है हमारे लिए, हमारे पास, जब हम किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करते रहते हैं. freshly and naively, in other words, in a very simple way, like a child. जिस तरह एक बच्चा बिना सोचे समझे अपनी भावना को प्रकट करता है, अगर हम भी ऐसे आभार प्रकट करने लगे तो ये कितना फ्रेश फील कराएगा. The basic goods of life, like the basic ordinary things in life. जब हम बहुत ही बेसिक, बहुत ही मामूली चीज़ों को आभार प्रकट करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा. With awe, like एक भावना की और same in Hindi, awe. Okay, awe, pleasure. प्लेजर, जब हम सेटिस्फैक्शन और सेटिस्फैक्शन खुशी से उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे. Wonder, like a sense of wonder, like, जब हम हैरानी से उस चीज़ को देखेंगे and even ecstasy. और जब हम उसमें मगन हो जाएंगे कि हम इतनी अच्छी और इतनी प्यारी चीज़ को देख रहे हैं. This is living in a different way, living with a different vision. ये तरीका जीने का काफ़ी अच्छा है जब हमारा नज़रिया बहुत ही बदल जाता है और छोटी छोटी चीज़ों का अप्रिशिएट करने लगते हैं. Like maybe at home your mom makes the same dal she makes every single day. जिस तरह हमारी मम्मा सेम दाल रोज़ बनाती है. And you could say, thank
you so much. This dal is so delicious. पर आप फिर भी बोलते हैं कि ये दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी है। I love this dal. I love this. And I love you. I love you. It's a nice one. Here's a nice one. It says, thanks, giving thanks is the highest form of thought. It's the highest function that the mind can do. किसी को शुक्रिया करना बहुत ही सबसे ऊंची हमारे माइंड से निकली हुई भावना हो सकती है। And gratitude is happiness doubled by a sense of wonder. और अगर हम जब आभार प्रकट करते हैं तो वो खुशी को भी डबल कर देता है। जब हम किसी चीज के बारे में हैरान होते हैं उसकी खुशी से भी ज्यादा। You like that one? Is this helpful? Yes. Good. Okay. Did any of you hear the class that I gave at Shopati a couple days ago? You heard that? Because there's something else I wanted to share with you, and then I want to tell you some stories of Prabhupada, but I think I should also share this with you because this is very good. These are four principles of community building that we shared in this class, and I think I'd like to repeat here because I think it's very important. माता जी ने क्लास में 4 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी शेयर किया था। माता जी वो हमारे लिए फिर से एक्सप्रेस करेंगे। Because these are all based on a practice of gratitude in our ordinary relationships. क्योंकि ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें आभार प्रकट करना सिखाते हैं। ये सब चीज़ों की नींव है। Okay, so there are 4 of them, and these are really important. So if you forget everything else I say today, maybe you can try to remember these 4. ये 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस लेक्चर में बाकी सब कुछ भूल भी जाएं पर ये याद रखें तो भी आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती है। Okay, so the first one is to treat everyone as if the success of your spiritual life depends on the quality of your interactions with them. आपका व्यवहार सबके साथ वैसा होना चाहिए जैसे अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सिर्फ वही आपको इंक्रीज करा सकते हैं। आपको उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, उतना आदर देना चाहिए। Like right now I'm going to talk to my friend and Krishna is watching and my whole spiritual life is depending on how I interact with this one devotee friend. मेरा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि मानो कृष्णा मुझे देख रहे हैं और मेरा व्यवहार उनसे बात करने का तरीका सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड करता है कि मेरी पूरी साधना कैसी रहेगी। Is that one good? Yes. Okay. And here's the second one. Reflect on the person you love the most. Like maybe it's your Guru Maharaj or maybe it's someone else. But think of the person you love the most in the whole world. And aspire to treat everyone with the same quality of love. जिससे भी आप बहुत प्रेम करते हैं, आपके गुरु महाराज या जो भी आप उनके प्रति जो भी आदर देते हैं उनको खुल कर दें, जो भी प्यार प्रकट करते हैं वो खुल कर दें और बाकी सबसे भी उसी विनम्रता और प्यार से व्यवहार करें। Like when Gopal Krishna Maharaj or Radhanath Swami or some big guru is coming to visit Punjabi Bagh, everyone is running around, where's the garland, and make sure everything is clean. And just imagine if we treated everyone like that. तो इतने बड़े बड़े महाराज राधानाथ स्वामी और गोपाल कृष्ण गोस्वामी आए हैं और वो सब लोग छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं कि माला तैयार है या नहीं, आसपास का जगह क्लीन है या नहीं। तो अगर हम भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो कितना अच्छा व्यवहार हमारा सबके साथ रहेगा। Okay, here's number 3. By the way, if you're getting too crowded at the back, there's lots of space up here in the front if you want to come up here. आप लोग आगे आ सकते हैं। Okay, here's number 3. View all conflicts. Yeah, there's plenty of room here, and because I'm in the human form, it's likely don't bite. Okay, so here's number 3. Lots of space right here. View all conflicts as your own fault first. Try to see if there's a fight or a problem or a disagreement. Try to see how, first of all, it might be your fault first. अगर आप किसी लड़ाई झगड़े का प्रतीक बनते हैं तो आप ये सोचें कि शायद आप भी उस लड़ाई का हिस्सा हो सकते हैं।
for you to grow, for growth, a chance for growth, और आपका मौका आगे बढ़ने का, a chance to clarify perceptions or the way you see things, और आपके नजरिए को बदलने का, and to create synergy or common ground. और आपस में हर चीज को समझ जाके ठीक करने का, उसको सॉल्व करने का. But that doesn't mean that you should be tolerating abuse. If you're in a situation of abuse, you have to seek help from someone you trust. अगर किसी लड़ाई में आप हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि शायद आपकी गलती है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आपके प्रति अब्यूज हो रहा है या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, तब आपको किसी मदद की ज़रूरत है. So that's very important to understand. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कभी-कभी आभार की भावना में अपने ऊपर हुए जो भी प्रॉब्लम्स है उसको एक्सेप्ट करते जाते हैं. तो हमें फ़र्क समझना है और हेल्प मांगनी है जब वो लाइन क्रॉस हो जाए. We all want to learn to be humble devotees, but we are also sacred and very beloved to Krishna. हम लोग आभार प्रकट करने के लिए यहाँ पे आए हैं, पर हमें ये भी समझना है कि हम कृष्णा के लिए बहुत प्यारे हैं. So if someone is beating you up or doing actual abuse, either verbal or physical or different ways, you have to let some trusted friend know and get help. तो अगर आपको कोई मार रहा है, आपको तंग कर रहा है, वो फिजिकली हो या मेंटली हो, तो आपको किसी दोस्त के पास जाके अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए. Okay, so that's number 3. Number 4 is realize that the people in your present environment, आपके आसपास अभी मौजूद जो लोग हैं, will probably be those people who will be there with you and live out your life with you. They will be around you in your life. शायद वो पूरी जिंदगी आपके आसपास रहेंगे. And those might be the very people who will be there to help you remember Krishna at the time of death. और वही लोग शायद आपकी अंतिम मृत्यु के समय भी आपको कृष्णा को याद करने के लिए मदद करेंगे. So we all will need help at the moment of death to have our friends help us to remember Krishna and remember to chant Krishna's name. So the people who are in your present life, in your present environment, look around, and these are the friends that you have to help you remember Krishna at the moment of death. तो आपके आसपास अभी जो भी दोस्त मौजूद हैं, आप उनको ऐसे समझें कि ये लोग वो हैं कि आपकी मृत्यु की घड़ी में कृष्णा को याद करने के लिए आपकी मदद करेंगे. So those people are very sacred, and we have to treat them in a sacred way. वो लोग बहुत ही ज़्यादा उच्च कैटेगरी के हैं, आप उनको बहुत ही ज़्यादा इज्जत और आभार के साथ में व्यवहार करें. And then just one more beautiful quote from Srila Prabhupada, and then I think I'll tell you some stories of Prabhupada. माता जी एक और कोट शेयर करेंगे, उसके बाद माता जी एक स्टोरी सुनाएंगे. So here's something Srila Prabhupada says that's very beautiful. He says, when we become convinced that Krishna is our intimate friend and protector, जब हम ये राजी हो जाते हैं कि कृष्णा ही हमें हर चीज से प्रोटेक्ट करते हैं और वो ही हमारे फ्रेंड हैं, how happy and peaceful we will be. हम कितने खुश और कितने शांत रहेंगे. He says, just be in love with Krishna. सिर्फ कृष्णा के प्रति प्रेम दिखाना, then you'll see how much tranquility you will feel. तो आपको पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रेसिंग में हैं, कितना ज़्यादा मगन हैं, कितने खुश हैं. How you are protected by Krishna. कैसे आपको कृष्णा ने हर चीज से संभाला हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है. How you avoid insufficiency. किस तरीके से जब किसी चीज की कमी है तो आप उससे भी दूर हैं. How you become pure. कैसे आप बिल्कुल प्योर हो जाते हैं. And how you make progress in spiritual life. और कैसे आप अपनी साधना में आगे बढ़ते जाते हैं. Nice quote from Prabhupada. Yeah. Nice. So Prabhupada is instructing us to fall in love with Krishna. प्रभुपाद हमें कृष्ण के लिए प्रेम में डूबने के लिए कह रहे हैं ताकि हम उनकी तरफ सरेंडर कर सकें. So let me think of some stories that I can share with you. Raise your hand if you're a teenager. IPM devotees hand raise करें. Now we have more teenagers. Okay. Good. So let me tell you some stories from when I was a teenager, 10,000 years ago. आज एक स्टोरी शेयर करेंगे जब वो टीनेजर थे 10,000 साल. So
So I became initiated by Srila Prabhupada when I was 16. माताजी initiate हुए थे प्रभुपाद जब 16 साल के थे। Raise your hand if you're 16. Nobody. 17? 18? 15. Good. Okay. So, so Srila Prabhupada was very grateful for any little service that anyone would perform. He was just thinking of the little Saraswati, who was the little daughter of Malati and Shamsundar. She was about 2 years old when they all came to India. प्रभुपाद बहुत ही ज़्यादा आभार प्रकट करते हैं जब भी उनके लिए कोई सर्विस करता है। तो एक छोटी सी 2 साल की बेटी थी मालती और श्याम सुंदर प्रभु जी की सरस्वती। And she was a very bold little preacher at the age of 2. वो 2 साल की थी तब भी उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बोल्डनेस थी कि वो किसी को भी प्रीच कर सकती थी। And she would walk up to people and she would say, "Do you know who is Krishna?" लोगों के पास जाके बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बोलती थी कि आपको मालूम है कृष्णा कौन है। And so if they said, "No, who is Krishna?" तो लोग जवाब देते थे कि कौन है कृष्णा। Then she would say, "He is the supreme personality of God." और वो जवाब में कहती थी he is the supreme personality of Godhead। And Prabhupada loved that so much. He would repeat that everywhere. In so many lectures, Prabhupada would say. और प्रभुपाद को इतना पसंद था कि प्रभुपाद हर लेक्चर में उसकी ही बात करते थे। So you see, you don't have to be a big genius to share Krishna consciousness. Just have a sincere heart. तो आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस बाकियों को प्रीच करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ एक सच्चे दिल से आपको प्रीच करना है। So you know this word sincere? What's the Hindi word for sincere? सिंसियर का हिंदी वर्ड Gambhir is grave. What's sincere? What about sincere? हिंदी वर्ड फॉर सिंसियरिटी Honest. What else? But in Hindi, what's the word? You know? Hardik. Simple. Nishkapat. You're looking. निष्कपट That's good. What is it? Nishkapat. Nishkapat. Without any duality. Without duality. Very good. Without adulteration. It's a very important word. So the English word sincerity comes from the Latin word sincera. And in the old days in Rome, when the people selling marble, if they were selling an inferior quality of marble that had lots of holes in it, they would fill it up with wax. I'm sorry. जब So inferior marble. सिंसियरिटी जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब है सिंसेर। और मानसी याद करते हैं कि एक जगह पे मार्बल बेचा जाता है जो बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है, तो उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, तो उस छेद को वैक्स से भर देते थे। So yeah, if it was inferior marble and it had holes in it, they would fill it with wax, and then they would sell it as first-class marble. तो वो उस घटिया मार्बल के अंदर वैक्स भर के उसकी सारे छेद और ऊपर खावर सरफेस को प्लेन करके ऐसे बेचते थे कि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मार्बल है। So it was basically cheating, right? So sincera means without adulteration, as you said, without adulteration. तो सिंसेरा का मतलब है कि जब उसमें मिलावट नहीं है, कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, कुछ और चीज की मिलावट नहीं है, वो प्योर है। So yeah, to become Krishna conscious means to be simple, sincere, and without false motives. तो आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने का मतलब है कि आप प्योर हैं, आपकी जो सोच है वो एकदम प्योर है और उसमें कोई मिलावट नहीं है। Right. So when I was probably about 16, जब माधवी 16 साल की थी, Srila Prabhupada was in Boston. I was living in the temple in Boston. तो प्रभुपाद बॉस्टन के टेम्पल में रहते थे, माधवी भी बॉस्टन में थे। And it seemed like in all of his lectures he was talking about, he kept saying, just try to become sincere, just try to become sincere.
और प्रभुपाद सारे लेक्चर्स में से फील कहते थे कि आप ट्राई करें कि आप सिंसेयर बने, आप ट्राई करो कि आप सिंसेयर बने. And so I asked him at the end of one lecture, so, but Srila Prabhupada, how do we become sincere? माता जी ने प्रभुपाद से लेक्चर के एंड में पूछा कि हम प्रभुपाद सिंसेयर कैसे बन सकते हैं. So he looked at me really like strongly. प्रभुपाद ने माता जी को बहुत ही उत्तेजित तरीके से देखा, बहुत ही प्यार से, बहुत ही घूर कर देखा. And he gave me such a funny answer. He said, how do you become a thief? और प्रभुपाद ने बहुत ही मजाक करते हुए माता जी को ये क्वेश्चन पूछा कि आप चोर कैसे बनते हैं. So I was really shocked. And so what do you say? What would be the answer that you would give? Association. What else? Become thief. To become a You become thief by doing thievery. by doing thievery, by association, by doing thievery. What else? By acting or practicing. By practicing. Yeah. By maybe eating what they eat, going where they go, To behave like them. behave like them, learn to talk like them, learn to do everything, right? So yeah, so that's what I was really surprised, and I said, you know, I would practice, I would do what thieves do, and practice stealing and associate with them, and I give all the answers that you all gave. So it's a very nice answer to a question. In other words, you might feel like I'm not really a sincere devotee, I'm full of holes. But just by trying to act in a sincere way and associate with people who are sincere, get the association of people who are sincere and serious about Krishna consciousness, then we can also learn to be Krishna conscious. So प्रभुपाद के इस उत्तर ने माता जी को ये समझाया कि प्रभुपाद ने बहुत ही खूबसूरती से इनडायरेक्टली आंसर दिया कि अगर आप चोर बनना चाहते हैं तो आप चोरों के बीच में रहें, चोरों की तरह खाना खाएं, चोर जो कर रहे हैं वो आप करें. तो अगर आप सिंसेयर बनना चाहते हैं तो आप उन्हीं डिवोटीज के साथ में रहें जो सिंसेयर हैं, वो जो करते हैं वैसे आप करें, जैसे वो बिहेव करते हैं वैसे आप करें. तो माता जी उनके आंसर से बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे कि प्रभुपाद ने कितने अच्छे तरीके से उनको इतनी छोटी सी बात बहुत अच्छे से समझाया. So, Prabhupada used to give the example sometimes that if you want to become a high court judge in the material world, you have to first of all get all the qualifications. तो प्रभुपाद बताते हैं कि अगर आप एक जज बनना चाहते हैं कोर्ट में तो आपको बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी जो एक जज की होती है. First, you would have to go to law school, then you would have to become a lawyer, then you would have to get appointed or elected as a judge. पहले आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा, फिर आप धीरे धीरे जज बनेंगे. And only then can you sit on the judge's bench, the high court judge's bench. और उसी के बाद आप उस लॉ के अंदर जो कोर्ट में जो चेयर होती है जज की, आप उस पर जाके बैठ पाएंगे. But he said in Krishna consciousness it's the opposite. First you're sitting on the judge's bench, and then all of the qualifications come afterwards. तो कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑपोजिट है, पहले से ही आप एक गद्दी पे बैठे हुए हैं और धीरे धीरे जब आप कृष्णा कॉन्शियस होते हैं तो गद्दी से उठ के एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस होते हैं. So first of all you have to act sincere and try to be sincere and try to chant sincerely and try to love sincerely. तो आपको पहले सिंसियरिटी अपनी लाइफ में लाना है, आपको चैंट सिंसियरली करना है, आपको लव सिंसियरली करना है, आपको सर्विस सिंसियरली करनी है. And then the qualifications start to come into your heart. और फिर आपके अंदर अपने आप क्वालिफिकेशंस आ जाती हैं, आप अपने आप पूर्ण होने लगते हैं कि आप कृष्णा कॉन्शियस में रहिए. Once in Australia, Srila Prabhupada was asked the same question by someone else. सेम क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया में एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा था. And he said, how do you become a drunkard? तो प्रभुपाद ने उन्हें उत्तर में दिया था कि आप एक ड्रंकर्ड, एक दारू पीने वाले इंसान कैसे बन सकते हैं. It's really a good way of answering it. So you would find where the best wine is, where the cheapest wine is, associate with drunkards, learn to act drunk, learn to talk like they talk. जिस तरीके से माता जी को चोर का एग्जाम्पल दिया गया था, उस व्यक्ति को उन्होंने एक दारू पीने वाले इंसान का एग्जाम्पल दिया और कहा कि अगर आपको दारू पीने वाला इंसान बनना है तो आप वहाँ जाओ जहाँ दारू मिलती है, उनके साथ बैठो जो दारू पीते हैं, उनके उस तरीके से बिहेव करो कि जैसे आपने दारू पी हुई है. And at that time Prabhupada said, then he said, you associate with all of them, and he pointed to all his disciples.
तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आप सिंसेयर बनना चाहते हैं तो यहाँ जितने सारे डिवोटीज बैठे हैं उन्होंने उनकी तरफ उंगली करते हुए कहा कि आप इनके साथ में रहें। So they are sincere, you associate with them. ये सब डिवोटीज बहुत सिंसेयर हैं, आप इनके साथ में रहें, इनकी एसोसिएशन को लें। So when you think about it, life is all about choices, right? We have choices at every moment. लाइफ में सिर्फ चॉइसेस की बात है, जो भी आप चूज करते हैं वैसी ही आपकी लाइफ होती है। Even in Bhagavad Gita, Krishna does not give commandments, he gives choices. भगवद गीता में कृष्णा जो है सीधे उपदेश नहीं दे रहे हैं, वो आपको चॉइसेस दे रहे हैं, आपको खुद चूज करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। Like in other religions, their scriptures are books of commandments, like the Bible, the Quran, they're books of commandments. बाकी जितनी भी किताबें हैं जैसे बाइबल है, उन सब में चॉइसेस नहीं है, रूल्स दिए गए हैं जो आपको सिर्फ फॉलो ही करने हैं। But in Bhagavad Gita, Krishna says, well, you could act like this, you could act like this, you could do this kind of yoga, you could do this kind of yoga. पर भगवद गीता में आपको ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, आपको चॉइसेस दिए जा रहे हैं कि आप इस तरीके का योगा कर सकते हैं, आप इस तरीके से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, आप ये वाली चीज अपना सकते हैं। This is what it means to act in the mode of ignorance, mode of passion, mode of goodness. वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप गुडनेस, इग्नोरेंस, इन सब के अंदर अलग अलग तरीके से अपने आप को बिहेव कर सकते हैं, आपको चॉइसेस देते हैं। Yeah, and then sometimes Krishna will say, but in my opinion, so humble, he says, but in my opinion, you should do this. So कृष्णा हमें सारे ऑप्शंस दे देते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, पर फिर बहुत ही humbly वो कहते हैं, पर अगर आप मुझसे पूछो तो मैं ये कहूँगा कि आप ये करो। Yeah, and so then at the end of the Gita, he says, Arjun, now I've told you everything, now what will you do? Yeah, that's your choice. वो एंड में भी अर्जुन को भी ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें सब बता दिया है, पर अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या करना चाहते हो। So when you become a teenager, you want to have options. तो जब आप टीनेजर्स होते हैं तो आप ऑप्शंस चाहते हैं अपनी लाइफ में बहुत सारे। Okay. You may not just want to do everything exactly the way your parents did it. आप हमेशा वो चीज़ नहीं करना चाहते जो आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं करने के लिए। Your intelligence starts to become mature and you start to observe people's actions and the reactions to their actions in their lives. आपका दिमाग बहुत मैच्योर हो जाता है, आप बाकी चीज़ों को देखते हैं और उसी तरीके से चूज करते हैं कि आपको क्या चाहिए। So Krishna has given each living being intelligence and we're free to choose how to act and how to live. कृष्णा ने हम सबको बहुत बुद्धि दी है और इतनी अच्छी बुद्धि दी है कि हम समझ पाए और चूज कर सकें हमें क्या चाहिए। And he's given each one of us gifts, unique gifts. और उन्होंने हम सबको यूनिक तोहफे दिए हैं, हम सबके पास कुछ खास खास तोहफे हैं। So each one of you is like a snowflake. You don't have snow here. हम सब एक बर्फ जो स्नो गिरती है उसके छोटे छोटे कण हैं। Did you ever hear that when they look at snowflakes under a microscope, everyone is completely unique? जब हम एक स्नोफ्लेक जो जब गिरता है ऊपर से, हर एक स्नो का जो टुकड़ा होता है अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हर किसी की फॉर्मेशन, हर चीज का आकार बहुत डिफरेंट होता है, हर स्नो का आकार अलग होता है। Even though it only lasts for a second before it melts. इवन अगर वो पिघलने से पहले भी एक सेकंड पहले आप उसको देखें तब भी उसका आकार कुछ डिफरेंट हो जाएगा। Krishna is so artistic. कृष्णा कितना ज्यादा क्रिएटिव है, कितने आर्टिस्टिक है। Yeah, so each one of you has unique gifts that are given by Krishna. So हम सबके पास कुछ यूनिक गिफ्ट्स हैं जो हमें कृष्णा ने दिए और हम सब में वो अलग अलग हैं। So those gifts you've received, those are God's gift to you, and how you will use them, that's your gift to God. आपको जिस तरीके से भगवान ने गिफ्ट दिया है और वो सब में यूनिक है, अब वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से वापस भगवान को एक तोहफा देते हैं अपने उन गिफ्ट्स को इस्तेमाल करके। So let me think of another story of Prabhupada that I should tell you. एक और स्टोरी सुनाएंगे प्रभुपाद ने जो हमको बताई थी। You want to hear a funny one? Yes. Okay. This one is really funny. So this one took place after a Rath Yatra festival in California. ये स्टोरी माता जी बताने हैं जब रथ यात्रा हो रही थी कैलिफोर्निया में, उसके बाद ये संवाद हुआ था। So one of the artists who was painting for Prabhupada's books, we were sitting in a room and this artist pulled a copy of Teachings of Lord Chaitanya off the bookshelf. तो एक व्यक्ति थे जो प्रभुपाद की बुक्स के लिए पेंटिंग्स कर रहे थे और उन्होंने किताब में से एक पन्ना निकाला। And he said, Prabhupada, we see
in the pictures of Lord Chaitanya, that Lord Chaitanya had very long hair. तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की एक फोटोग्राफ निकाली और कहा कि देखो प्रभुपाद की चैतन्य महाप्रभु के कितने लंबे बाल हैं. And Prabhupada would answer questions according to the mentality with which the question was asked. और प्रभुपाद बहुत ही समझदारी से उस व्यक्ति का आंसर हमेशा वैसे ही देते हैं जिस टाइप का वो व्यक्ति है. So it seemed as though Prabhupada could understand that this person was thinking, well, Lord Chaitanya had such long hair, why do we have to have shaved hair? So प्रभुपाद समझ गए थे कि व्यक्ति का सवाल इसीलिए आया क्योंकि वो शायद गंजे होंगे. तो उन्होंने बोला जब हमें गंजे रहने का रूल निकाला है तो चैतन्य महाप्रभु के तो इतने लंबे बाल हैं तो हम इनडायरेक्टली गंजे क्यों हैं? So Prabhupada said, he said, yes, Chaitanya Mahaprabhu, he was hippie. तो प्रभुपाद उनको समझाने के लिए कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक हिप्पी थे जैसे बैरागी हिप्पी. And then it was so funny because of his Bengali. Well, so he said, therefore he has come to save you. इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हमें बचाने के लिए आए हैं क्योंकि वो हिप्पी हैं. वो नहीं चाहते कि हम लोग उनकी तरह हिप्पी बन जाए. But because of his Bengali accent, we weren't sure. In Bengali the words are S, more or less SH. So we weren't sure if he was saying save you or shave you. क्योंकि प्रभुपाद का जो बोलने का तरीका उसमें बंगाली भाषा का काफी ज्यादा टेस्ट है. तो वो हमें ये कहना चाह रहे थे कि वो he has come to save you, बट उनकी बंगाली भाषा में वो निकल रहा था कि उनको शेव करना है. So funny. So he was laughing and he kept repeating that over and over again. That Chaitanya Mahaprabhu has come to save you and shave you. तो प्रभुपाद अपनी एक्सेंट में बार-बार यही चीज बार-बार दोहराते हैं कि प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु आपके पास आए आपको सेव करने के लिए, आपको शेव करने के लिए. So that was really funny. Yeah. Let me think of another story. Yeah, there's one that I like very much that Srila Prabhupada, it was a Vyasa Puja ceremony, and one devotee was sitting right at the base of the Vyasa-san, Prabhupada's Vyasa-san. तो एक व्यास पूजा के वक्त का ये स्टोरी है जब एक व्यक्ति उनके पास में व्यासासन के पास में बैठे हुए थे. And each devotee, one by one, was coming up and saying so many sincere or maybe flowery words to Prabhupada. Oh, Prabhupada, you are Patita Pavana. So many different things that there was. So devotees one by one प्रभुपाद के पास आ रहे थे और उनको glorify कर रहे थे कि आप कितने पतित पावन हैं, आपको glorifications दे रहे हैं, उनके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं उनके पास आके. But this devotee who was right by Vyasa-san heard Prabhupada. After each one, Prabhupada was saying, now you become. Each person would say something, you are the savior of the whole world, Prabhupada. Now you become. तो वो जो व्यक्ति नीचे बैठे हुए थे वो देख रहे थे कि प्रभुपाद किस तरीके से हर किसी को उत्तर एक ही दे रहे हैं. जो भी व्यक्ति उनके पास आके कहते हैं कि प्रभुपाद आप ऐसे हैं, आप अच्छे हैं, तो प्रभुपाद जवाब में कहते थे कि अब तुम बनो. So isn't that a beautiful consciousness? Instead of just taking praise and letting it become a big false ego on your head, but just turning it around. Whatever you're saying to me, you become like that. तो ये कितना अच्छा व्यवहार है कि अगर हमारी कोई तारीफ करता है तो हम उसको पलट के कहते हैं कि अब वो तुम बनो या तुम करो. तो किस तरीके से हम उसको अपने सर पे आभार ले रहे हैं, बट उसको अपने दिमाग में ऐसे नहीं चढ़ा रहे कि ये मेरे लिए ग्लोरिफिकेशन है. So then I'll tell you my most favorite story of Prabhupada that I love the most. So this is, I think, a very important instruction. So one devotee, he was a new devotee, he was very young, and he was, how do you say spaced out in Hindi? Spaced out. बहुत ही अकेले रहने वाला व्यक्ति, बहुत ही अपने में घूम रहने वाला व्यक्ति. Is there an Introvert you're trying to say? No, just like kind of Lost. Yeah. How do you say that in Hindi? Lost? अपने में खोया. So he was kind of like that. And so they gave him the job of being Prabhupada was staying for a few days in West Virginia, and they gave him a rented house for a few days that was a little bit distant from the temple. So माजी प्रभुपाद की एक स्टोरी बताते हैं जिसमें काफी यंग व्यक्ति थे. प्रभुपाद वेस्ट वर्जीनिया में रह रहे थे, रेंट पे एक छोटे से घर में रह रहे थे. So they gave this very young man the service of being the night guard, the chowkidar.
night guard. तो उन्होंने उस यंग व्यक्ति को ये ड्यूटी दी थी कि वो प्रभुपाद के इस घर के आगे गार्ड बनेंगे. So he was guarding from outside, and Prabhupada was upstairs in his room, and Prabhupada was speaking, and he could hear Prabhupada. तो जब वो गार्ड कर रहा था बाहर प्रभुपाद के घर के सामने खड़े होके, तो वो सुन पा रहा था कि प्रभुपाद कुछ कुछ बोल रहे हैं. And he was hearing Prabhupada, and he thought, wow, Prabhupada is reading his own books. और वो सुन पा रहा था कि प्रभुपाद अपनी ही किताबों को दोहरा रहे हैं. But then he heard that the dictaphone was clicking on and off, and he realized Prabhupada was translating his books. पर फिर उसने ध्यान से सुना कि एक ट्रांसलेटर डिवाइस होता है, उसके आवाज़ बटन की आवाज़ आ रही थी, तो वो समझा कि प्रभुपाद अपनी किताबों को ट्रांसलेट कर रहे हैं. So he was so charmed hearing Prabhupada. तो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, बहुत खुश हुआ कि प्रभुपाद अपनी सर्विस कर रहे हैं. But then it started to rain a little bit, so he went into the attached garage and to do his service from inside there. पर उसी वक्त बारिश होने लगी, तो वो साथ में जो गैराज था उसके वहाँ खड़ा हो गया, बट तब भी गार्ड कर रहा था. Okay, so then he was in there, and then he felt a presence right behind him in the garage. And he turned around, and Srila Prabhupada was standing right behind him. जब वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, बारिश से बच के पर गार्ड कर रहा था, तो उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है. जब उसने मुड़कर देखा तो प्रभुपाद वहाँ खड़े हुए थे. So he bowed down and offered his obeisances. तो उसने झुककर प्रणाम किया प्रभुपाद को. And then he stood up and he said, Srila Prabhupada, is there any service I can do for you? मैंने बहुत प्रेम भावना से प्रभुपाद को बोला कि कोई भी सेवा है जो मैं कर सकता हूँ. And so here comes the really important part. So Prabhupada said, yes, you can go where I will not go. तो प्रभुपाद ने उनको डायरेक्शन दी कि हाँ तुम्हारे लिए एक सेवा है, तो वहाँ जाना जहाँ मैं नहीं जा सकता. But he didn't understand because Prabhupada was going everywhere. पर उसको समझ नहीं आया कि प्रभुपाद के कहने का क्या मतलब है, क्योंकि प्रभुपाद तो सब जगह जा रहे थे. Prabhupada had just been to Venezuela, California, Texas, Chicago. तो प्रभुपाद टेक्सास गए, कैलिफोर्निया गए, शिकागो गए, वो सब जगह जा रहे थे. He's on his way to New York, London, Paris, Germany, और Japan. उनके आगे का शेड्यूल था न्यूयॉर्क, जापान, लंदन, ये सब जाने का. So he's trying to understand what do you mean, Prabhupada? You go everywhere. तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रभुपाद की इस बात का क्या मतलब है कि वो जगह जाए जहाँ प्रभुपाद नहीं जा सकते. Okay, here's the super most important part. तो ये सबसे जरूरी पार्ट है. So Prabhupada said, go to the future, and by the way you treat the people there, they will know how much Krishna loves them. तो तुम्हें फ्यूचर में जाना है, तुम्हें समय के आगे जाना है और बताना है लोगों को कि कृष्ण उनसे कितना प्रेम करते हैं. So this is such an important instruction, don't you think? So you are all the people of the future. हम सब एक आगे आने वाली घड़ी का पार्ट है, जहाँ हम लोगों को जाकर बताएंगे कि कृष्ण हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं. हम प्रीच करेंगे कि कृष्ण हम सब के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं हमसे. So by the way you treat the people here in the future, they will know how much Krishna loves them. तो अगर अभी आप जैसे भी लोगों से व्यवहार करेंगे, वैसे ही लोगों को पता रहेगा कि आगे जाके कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं. And if you're mean to people and rude to people, they'll think, why should I listen to what you have to say? You devotees are mean, rude. अगर हम लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, उनसे गलत तरीके से बात करेंगे, उनसे गुस्सा करेंगे, तो फिर वो समझेंगे कि हम तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे, आप कृष्ण हमसे प्रेम क्यों करते हैं जब तुम ऐसे हो. तो Do you think it's a good instruction? क्या ये एक अच्छी इंस्ट्रक्शन है? Like I used to have a business, and we had one very nice manager in our business. She wasn't a devotee, but she was a very, very good person. सुमाची बता रहे हैं कि एक वुमन थी जो बिजनेस वुमन थी एंड मैनेजर थी, बट वो डिवोटी नहीं थी, बट काफी अच्छी मैनेजर थी. So once she was in the grocery store, and someone she knew who was a devotee was in the line at the grocery store ahead of her. तो वो ग्रोसरी यानी एक सब्जी बेचने की दुकान में मैनेजर थी और सड़क पार ही एक आदमी कोई व्यक्ति खड़ा था. So this devotee, she knew that this person was a devotee, and this devotee was being very rude to the lady working, the clerk at the store. जो व्यक्ति उस पार खड़ा था वो एक डिवोटी था. मैनेजर जानती थी कि वो पर्सन डिवोटी है और वो डिवोटी बहुत ही रूड तरीके से किसी से बात कर रहा था. So this manager asked me how she said, I'm so surprised that a devotee was acting like this to the clerk in the store. She said, I thought devotees were such good people, and I'm so surprised that she's acting like that.
तो उस मैनेजर ने माता जी को बोला कि वो डिवोटी है पर वो मेरे एक वर्कर से कितनी बुरी तरीके से बात कर रहा है, मुझे बहुत हैरानी होती है कि डिवोटी होने के बावजूद वो ऐसी गलत तरीके से बिहेव कर रहा है. So I think it's really, really important. Like also, if you're distributing books, someone, if they're naturally going to be thinking, if I take this book, then I'll become like her. She's trying to sell this book to me. If I take this book and read it, then I'll become like her. तो जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं तो हमें ख्याल रखना है अपने व्यवहार का, क्योंकि जो व्यक्ति हमसे किताब लेता है वो ये सोचता है कि अगर मैं किताब लूँगा तो मैं इसी व्यक्ति की तरह बन जाऊँगा. तो हमारा आचरण और हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उस व्यक्ति को लगे कि अगर मैं ऐसा बनूँगा तो वो अच्छा है. So it's very important the way we treat the people here in the future. They will know how much Krishna loves them or not. ये बेहद ज़रूरी है कि हम किस तरीके से इंसान के साथ व्यवहार करते हैं और इसी से पता लगेगा उनको कि कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं. So thank you all for being nice representatives of Srila Prabhupada. And do you have any thoughts or reflections, or what was important for you here? Was there something that was important for you, or do you have any questions? So माता जी थैंक यू करते हैं हम सबका यहाँ आने के लिए और हमें प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग. और माता जी पूछना चाहते हैं कि आपका कुछ भी कहना है, कुछ भी सवाल है, कुछ भी आप उनको बताना चाहते हैं, कुछ भी मन की बात आप शेयर कर सकते हैं. Hi Krishna, thank you so much Mataji. So Mataji, like it's been 51 years you are into Krishna consciousness. So Mataji, were there low points in your Krishna consciousness when you really feel something like depressed, that I'm not doing good in Krishna consciousness, and low points and how you dealt with that low times in your Krishna consciousness? Thank you. That's a very good question. Thank you very much. Very sincere question. So, yeah, I'll tell you a story. Once I was having a very difficult time in my marriage, and my husband was really quite crashing in Krishna consciousness, and I went in front of the deities, and I was saying to them, I know I'm supposed to offer you beautiful, nice things like flowers and fruit, beautiful things, but right now all I have to offer you is this terrible anxiety that I'm feeling. So I think it's an important instruction, because usually we think, oh, if I'm having problems or if I'm crashing, I should let you translate. So भावना माता जी का सवाल है कि माता जी की लाइफ 51 years of Krishna consciousness में क्या ऐसी कोई घड़ी आई है जब उन्हें बहुत ज़्यादा लो लगा कि वो भक्ति में अच्छे से नहीं कर रही है, या वो बहुत ज़्यादा उनका मनोबल बहुत गिर रहा है. तो माता जी बताते हैं कि हाँ, उनकी लाइफ में ऐसा एक समय आया था और वो उनकी शादी और वैवाहिक संबंध में दिक्कत थी कि जब उनके जो हस्बैंड थे वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में गिरते जा रहे थे. और माता जी जब डीटीज के सामने प्रे करने गई तो उनके पास कुछ फ्लावर या कुछ प्रसादम ऑफर करने के लिए नहीं था, पर बहुत ही ज़्यादा टेंशन्स और एंजाइटी ऑफर करने के लिए थी. वो कृष्णा के सामने अपने दुख लेकर गई थी. Because usually we think that I'll offer Krishna this nice rasgulla or a nice beautiful lotus flower, but all the anxiety or stuff like that. तो हम हमेशा ये भावना रखते हैं कि भगवान को अच्छी चीज़ें चढ़ाएं, उनको अच्छा प्रसाद, अच्छे रसगुल्ले, अच्छे फ्लावर्स चढ़ाएं, पर जो मेरी टेंशन है, जो एंजाइटी है, वो मैं अपने अंदर दबा कर रखूँ. वो मैं नेगेटिव है तो वो मैं कृष्णा को क्यों ऑफर करूँ. But it's very important to also understand that when we're in those difficult situations, we shouldn't be carrying that anxiety and stress. You said shadi, is that the word? Short is that's shadi. Shadi is marriage. Shadi is marriage, okay. So, yeah, to offer the kind of the difficult things to Krishna also, that I can't carry this, I'm very tiny and small. पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें अपने कंधों पे प्रॉब्लम्स और टेंशन्स नहीं रखनी चाहिए और सिर्फ प्रसाद और फ्लावर्स ऑफर नहीं करनी चाहिए. हमें कृष्णा को वो भी देना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझसे इसका बाहर नहीं समझा जा रहा है, तो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ. Because Krishna is the big fire and we're just the little sparks. क्योंकि कृष्णा बहुत बड़े आग का प्रतीक है और हम उस आग की बहुत ही छोटी सी चिंगारी हैं बस. So sometimes we have to offer those stresses and anxieties and fears and just say, you're the big fire, I'm just a little spark, and I offer it to you, I put it at your feet.
please burn up these problems and these anxieties. पर हमें अपनी प्रॉब्लम्स को भी कृष्णा के सामने रखना चाहिए और कहना चाहिए कि कृष्णा बहुत बड़े आग का प्रतीक है और मैं उस आग की सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी हूँ, आप मेरे दुख लीजिए और इसको भी जला के खत्म कर दीजिए. Yeah, I think that's really important, you know, that it's not that I keep all the bad stuff to myself to kind of try to carry in so much anxiety, but try to give it to Krishna. पर ये भी करना चाहिए कि हमें अपनी सारी एंजाइटी और प्रॉब्लम्स भी कृष्णा से शेयर करनी चाहिए. So here at your temple you have Krishna and Balaram, right? So when Prabhupada first installed Krishna, Balaram in Vrindavan, he said that you should take your problems to Lord Balaram. You've heard that before? Yes. And a subversion Prabhu in Vrindavan would always say, Balaram is a psychiatrist. So, माची कहते हैं कि प्रभुपाद ने पहले डीडीज कृष्णा बलराम स्थापित किए थे वृंदावन में और वो ये कहते थे कि आप सब लोग बलराम जी के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाएं क्योंकि बलराम जी साइकियाट्रिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट यानी जो आपके दिमाग की प्रॉब्लम्स को शायद सॉल्व कर सकते हैं. So here at Punjabi Bagh you have Balaram in two forms. You have Jagannath, Subhadra and Baladev, and you have Krishna and Balaram. तो हमारे पास डबल बेनिफिट है पंजाबी बाग टेम्पल में. हमारे पास दो साइकियाट्रिस्ट हैं, हमारे पास बलराम जी हैं और बलदेव सुभद्रा महारानी जी भी हैं. And also the Guru is representative of Balaram. और ऑब्वियसली गुरु जी जो हैं प्रभुपाद वो रिप्रेजेंटेटिव हैं. Yeah, and Srila Prabhupada would often say that the grandfather is naturally more affectionate to the grandchildren than to the children. और ये कहते हैं कि जो प्रभुपाद है वो बहुत ज़्यादा प्रिय है भगवान को, हमसे भी ज़्यादा प्रिय है. जो हम उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और ये हमारे ग्रैंडफादर हैं, तो कृष्णा सबसे प्रेम करते हैं बट इनसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं. So Prabhupada will naturally be more affectionate to all of you than will be to his children that gave him so much anxiety. तो प्रभुपाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेममयी भावना रखेंगे क्योंकि हम उनके छोटे से ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और वो हमें भी हमसे भी हमारे टेंशन ले लेंगे. So you can pray to Balaram and Prabhupada. तो हम लोग बलराम और बलदेव सुभद्रा महारानी, जगन्नाथ भगवान और प्रभुपाद से प्रे कर सकते हैं. Yeah, and I wanted to tell you right now I'm staying at the home of Tejna and Sahil. तेजना माता जी के घर पे रह रहे हैं. And so their little daughter, Maitili, तो उनकी छोटी सी बेटी है Maitili, she only loves the grandfather. Her favorite one is the grandfather. तो वो अपने दादाजी से बहुत प्रेम करती है. So you can pray to Prabhupada and say, I'm your little granddaughter. तो आप प्रभुपाद से प्रे कर सकते हैं कि मैं आपकी पोती हूँ और आप मेरे सारे दुख हरें और मुझे भक्ति में आगे बढ़ाएं. Yeah, so it's not that you jump over your own guru if you have a guru you're initiated by or aspiring for, but Prabhupada will be very merciful to you also. तो अगर आप इनिशिएट होने का सोच रहे हैं और आप एस्पायर करेंगे आप भक्ति में आगे बढ़ें तो प्रभुपाद बहुत खुश होंगे. Yeah, it's kind of a tension because on the one hand we don't want to be coming to Krishna with all of our list of material anxieties, but on the other hand you don't want to also try to just carry it like a big burden of rocks on your own shoulders. आप कृष्ण कॉन्शियस में आना चाहते हैं तो हम अपनी मटेरियल डिजायर्स भावना सबको छोड़ के आना चाहते हैं, पर फिर ये भी अच्छा नहीं है कि अपने शोल्डर्स पे हम सारी टेंशन लेकर कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं. But you can also say, you know, I'm just very small and I don't know what to do in this situation, so please help me. हम भी कह सकते हैं कि मैं बहुत छोटी हूँ और ये सारी प्रॉब्लम्स अपने शोल्डर्स पे नहीं संभाल सकती, तो आप प्लीज आइए और मेरी मदद कीजिए. And you'll find that answers will come. So I think that's helpful. Do you have other questions? Yes, there's one hand there in the teenage section. I'm Hare Krishna Mataji, myself Gauravi, and as I'm a teenager, I'm under Krishna consciousness and I don't eat onion and garlic. But my friends do ask me that why I don't eat onion and garlic. So what should I reply? You can tell them that when you're on the path of yoga, try to put it in terms that they can understand. When you want to bring up your consciousness to a higher level of realization, and yogis, when they're trying to elevate their consciousness rather than having it dragged down, they try to avoid foods that bring down the consciousness.
आप मान जी का क्वेश्चन है कि उनसे उनके दोस्त पूछते हैं कि वो अनियन गार्लिक क्यों नहीं खाती हैं, तो उनको क्या जवाब दें? तो माता जी जवाब देती हैं कि आप उन्हें उनके ढंग से समझा सकते हैं कि आप जो खाते हैं वो आपकी कॉन्शियसनेस को बनाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो चीज़ मेरी कॉन्शियसनेस को नीचे कर रही है मैं वो नहीं खाती, मैं एक योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ और उसके लिए मैं वही करूँगी, वही खाऊंगी जो मेरी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। You know, sometimes you can talk about how there are subtle laws, and there are subtle laws of nature. And if you want to bring up your consciousness in yoga, then you can try to uplift your consciousness. Do you think that's a good answer? आप उन्हें योगा के लॉज के बारे में बता सकते हैं और कह सकते हैं कि वहाँ सर्टेन लॉज हैं जिसको आप फॉलो करें तो योगा प्रैक्टिस में आपके लिए कॉन्शियसनेस जो है वो और ऊंची हो जाती है। But they make fun of you. They make fun of you? Yeah. Then you can say that, let's see, you might laugh, but when I develop more spiritual powers of understanding, then you'll see how not eating onions and garlic was so much benefit. आप उनको जवाब दे सकते हैं कि जब मैं स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाऊंगी तब आप लोग तब भी हंसते रह जाएंगे और मैं बहुत ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ जाऊंगी और योगा में इंक्रीज आपका कॉन्शियसनेस इंक्रीज होगा। Kids like to make fun of anyone who's different, anyone who steps out, right? So you can just say, I'll be developing subtle powers of intuition and yogic powers, and then I'll be the one laughing at you. बच्चों में अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता है जो अलग से खड़े होते हैं तो उनको अलग समझा जाता है। तो माता जी कहते हैं कि जब आप योगा प्रैक्टिस करके उनसे अलग हो जाएंगे, उनसे अलग ऊंची दृष्टि पे देख सकेंगे चीजों को, तो फिर अब आप उन पे हंसना। I find India so funny. I was trying to remember where I was. I was somewhere in India and they were telling me that people, they eat fish, but they won't eat onions and garlic. इंडिया बहुत फनी है जहाँ पे उनको कोई कह रहा था कि आप लोग मछली खा सकते हो पर आप अनियन गार्लिक नहीं खा सकते। Or sometimes people, you know, no meat, no fish, no eggs, no intoxication, no illicit sex, no gambling, but giving up tea is the most difficult thing. So, yeah. So you know, you can tease them back. Sometimes if they tease you, you can tease them back. There's one story of Prabhupada that he was on a train in Bengal, and there was one young girl who was dressed up for her marriage, very traditional Bengali type of a wedding dress. She was on the train. So प्रभुपाद एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक लेडी की शादी होने वाली है, वो पूरी कल्चरल ड्रेस दुल्हन के अवतार में खड़ी थी वहाँ पे। And Prabhupada said some very modern young girls started to tease her because she's in this very traditional dress. वहाँ पे खड़ी लड़कियाँ जो काफी मॉडर्न ड्रेसेस में थी, वो उस लड़की को टीज कर रही थी, उसको छेड़ रही थी कि वो कैसे ट्रेडिशनल ड्रेस में खड़ी है। Yeah, listen to this because this is for you. This is for you. So there's this girl, she's on her way to her wedding, right? And she's in this very traditional Bengali wedding bride's dress. And the other girls on the train were wearing a modern dress. They all started teasing her. तो माता जी बता रहे हैं कि ट्रेन में है और एक लड़की अपनी शादी के लिए जा रही है और उसने पूरा बंगाली ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है और वहीं पे बाकी गर्ल्स जो है उन्होंने मॉडर्न ड्रेस पहना है और उनको छेड़ रही है। So this girl, she got so she was disturbed by them, and so she, I don't know what she had, like with her little purse or something, she gave them a whack. तो उसको इतना गुस्सा आया इसलिए बातों से जो मॉडर्न लड़कियां खड़ी थी कि उसने उठा के ऐसे उसके ऊपर वार सा कर दिया। So Prabhupada said to her, you did the right thing. सही किया। So it's a nice thing to know you can tease them back. So you're laughing at me, but I'm going to have the last laugh because my consciousness will be so clear like a yogi. माता जी बताते हैं कि अभी वो आप पे हंसने ही वक्त आएगा कि आप उन पे हंसेंगे और आपकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बहुत क्लीन हो जाएगी, तब आप उनके ऊपर भी वार कर सकते हैं, आप उनको वापस छेड़ सकते हैं पर अपनी कॉन्शियसनेस को बिना बिगाड़े और आप फिर अंत में आपकी जो हंसी है, आपकी जो लाफ्टर है वो सबसे अल्टीमेट होगी। Is that helpful? Okay, what else? Teasing, peer pressure.
Hare Krishna. Thank you, Mataji, for such a wonderful lecture. Mataji, in Chowpatty Temple, you shared that when Prabhupada handed you the chanting bead, then Prabhupada commented that you are so beautiful, so now become internally beautiful. So maybe if you can share one or two qualities. You mentioned that you took that instruction to your heart. So maybe anything that you can share how you are trying to be beautiful inside or internally. And Mataji, my second question is in that lecture only, in the third point, view all conflicts as your fault first. So there you mentioned that hearing is a very important quality. You were giving the example of His Holiness Radhanath Swami in Chowpatty Temple. So Mataji, sometimes when we are hearing to someone, we often become judgmental. I'm talking about myself. Lots of thoughts start coming in mind. Why she is telling this to me? What is the purpose behind this? Sort of. So how to get rid of this? So I was, first of all, let me tell the story of the initiation. So I was only 16 years old. So in the story of Rukmini, she was also very young. So maybe because of that, I reminded Prabhupada. He hadn't told the story of Rukmini yet. So माताजी का सवाल है कि माताजी जब इनिशिएट हुए थे तो प्रभुपाद ने उनको बोला था कि आप इतने खूबसूरत हैं, अब मैं चाहता हूँ कि आप अंदर से भी खूबसूरत बने. और माताजी का दूसरा सवाल है कि जब माताजी किसी का लेक्चर सुनते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा उनके प्रति जजमेंटल फीलिंग आती है, यानी वो उनके बारे में सोचने लग जाती है. लेकिन माताजी ने जो थर्ड पॉइंट बताया था ना, तो माताजी लेक्चर में शेयर कर रहे थे कि हियरिंग इस पॉइंट का बहुत माताजी का जो थर्ड पॉइंट माताजी ने बताया कि जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हम उसे पहले अपना फॉल्ट देखें, उसके बाद किसी को जज करें. तो माताजी चौपाटी में माताजी का लेक्चर हुआ था अभी 4 days पहले, तो माताजी बता रहे थे कि इस पॉइंट को अपनी लाइफ में उतारने के लिए हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है. तो मेरा क्वेश्चन माताजी से ये है कि जब हम किसी को सुनते हैं, अगर हम किसी की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कभी भी हमारा किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट होता है और हम किसी सामने वाले का पॉइंट सुनते हैं, तो हमारे मन में बहुत बार हम उस व्यक्ति के लिए जजमेंटल हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, इसके पीछे की स्टोरी क्या होगी, क्या ये सच बोल रहा है, मुझे क्यों बता रहा है, सॉर्ट ऑफ. तो ये जजमेंटलिज्म जो हमारे माइंड में चलता है, बैक ऑफ द माइंड, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? So that's the second part of the question. So usually we don't really hear each other, and when someone actually hears us, they can become very, very dear to us just by hearing and listening. So माताजी कहते हैं कि हियरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बट हम लोग एक्चुअली में एक दूसरे की बात सुनते नहीं हैं. बट अगर कोई हमारी बात सच में सुने तो हमारे लिए वो पर्सन बहुत डियर हो जाता है. Usually when someone is talking to us, we're just waiting for them to finish so we can respond with whatever we're thinking. We're not really hearing them. तो जब भी कोई व्यक्ति हमसे बात करता है तो हमारा ये इंटेंशन होता है कि कैसे वो व्यक्ति से बात करना खत्म करे और मेरे मन में जो भी रिप्लाई तैयार है मैं वो बोलूँ, पर हम उसकी बात सुनने के लिए बस रिप्लाई करने के लिए वेट कर रहे हैं, उसकी बातें समझ नहीं रहे. And also we like to think of ourselves as preachers in Krishna consciousness, so we like to preach, but people don't like to be preached to, right? So हम कृष्णा कॉन्शियस में हमें प्रीचिंग के लिए कहा जाता है, पर हम हमेशा प्रीच करने के लिए तैयार रहते हैं, पर हमें समझना भी बहुत जरूरी है. Are we over time? We have last 2-3 minutes more because yeah. Okay, so let me just try to finish up. So even when we're preaching to people, we have to really try to hear them and understand where they're coming from. And also when someone's speaking to you and pointing out some fault, you have to think, wow, maybe I have something to learn here. Really try to hear and see how we can learn even from a so-called offensive person. तो हम सब लोग प्रीच जब करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस इंसान की बात सुने, और अगर उसकी बात सुन के हमें कोई ये बताता है कि हमारे में ये कमी है तो हमें खुश होना चाहिए कि उस इंसान ने सच में मेरी बात सुनी है और मुझे रिप्लाई किया है और अच्छे से मुझे समझ के रिप्लाई किया है. In that way, even someone who's a so-called enemy, maybe
be your very best friend by pointing out something that you're doing wrong that maybe no one else wants to tell you. ऐसे में हमें अपने दुश्मनों का भी बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहिए कि अनजाने में वो हमें हमारी कमी बताते हैं, और शायद वो कमी अगर हम ठीक कर लें, हम उस कमी के बारे में सोचें और उसे ठीक करें तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है. Is that helpful? Okay. So I think I went over time, huh? One quality. What's that? First question, one quality. One quality. Well, I would say that's that Prabhupada said to me, "You're a beautiful girl. Krishna can accept any number of beautiful girls. So someday Krishna will kidnap you." माता जी का जब इनिशिएशन हुआ था तो प्रभुपाद ने बोला था बहुत सुंदर है तो आप अंदर से भी सुंदर बने. तो माता जी ने उनसे ये पूछा कि ऐसी क्या क्वालिटी है, तो माता जी मैंने ये पूछा था, माता जी बता रही कि प्रभुपाद ने बोला कि कृष्ण कैन एक्सेप्ट. तो माता जी बता रहे हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा तो एक्सेप्ट कर सकते हैं बहुत सारी सुंदर लड़कियां, तो एक दिन आएगा जब कृष्णा आपको भी किडनैप करके ले जाएंगे. So you see, even circling back to the first points I was making about gratitude and appreciation. So Prabhupada was appreciating me, my heart opened, and then he said, "Now become more beautiful within also," which is the real important instruction. माता जी बात करते हैं कि पूरा एक सर्कल है कि हमने बोला आभार प्रकट करना कितना जरूरी है, तो जिस तरीके से प्रभुपाद ने माता जी को इंस्पायर किया कि आप देखो कितने सुंदर हो, तो माता जी समझे कि ठीक है मैं सुंदर हूँ, प्रभुपाद ने मेरे लिए आभार प्रकट किया तो मैं इंटरनली सुंदर बन के मैं कृष्णा की भक्ति में बिल्कुल ही लीन हो गई. तो आभार प्रकट करना कितना जरूरी है, हमें वो दिल खोल के फिर हम कृष्णा की भक्ति में अप्रिशिएट करते हैं, लोगों का अप्रिसिएशन के साथ में हमारा दिल खुल जाता है. So how am I doing it is your question. I would say that I pray to Krishna and I cry to Krishna and I say, "Oh my friend, oh my friend, oh my friend, please help me. I don't know what to do. I don't know how to do this, so please carry what I lack." So माता जी पूछते हैं कि अब वो कैसे अपनी लाइफ में कृष्णा कॉन्शियस को एंजॉय करते हैं. तो माता जी कहते हैं मैं इसे कृष्णा के सामने क्राई करती हूँ, उनको कहती हूँ कि आप मुझे संभालें, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप बस मुझे संभालिए और मैं कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ूँ. Because in one place in Srimad Bhagavatam, in the story of Lord Nrsimhadev, Prabhupada says that, no, Lord Nrsimhadev says that it is his pleasure pastime to sit in the heart of all living beings and to fulfill their desires. माता जी एक स्टोरी बताते हैं जहाँ लॉर्ड ऋषिदेव अपने और उनको कहते हैं कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं हर व्यक्ति के दिल में बैठूं. So Krishna is riding with us in the body of a hog and a dog and a human and every other body up, down, demigod. So इसी तरीके से कृष्णा जो है वो हम सबके दिल में है, चाहे वो एक एनिमल का बॉडी हो या हमारा बॉडी हो, हर किसी के अंदर व्यक्ति के अंदर उनके हृदय में कृष्णा बैठे हैं. And he's just waiting to fulfill our desires, bad, good, whatever. और वो इंतजार कर रहे हैं हमारी